angular triangle ABC right angular at B. It is given that given condition है cot theta is equal to 7/8. इसमें हमें ट्रायंगल के 3 साइड्स निकालने हैं। इस कंडीशन को गिवन कंडीशन को मद्देनजर रखकर cot theta is equal to 7/8. P B P H H B sin cos tan. Cot is reciprocal of tan, so we have to consider tan theta. Tan is perpendicular by base, perpendicular divided by base. Cot is its reciprocal. Cot theta is equal to base by perpendicular. If we consider this as theta, this is base, this is perpendicular. Cot theta is equal to base by perpendicular AB divided by BC. That means AB by BC is equal to 7/8. Cot के बदले AB by BC. It means AB is equal to 7 and BC is equal to 8. AB is equal to 7, BC is equal to 8. दो साइड इस ट्रायंगल के निकल गए। अब तीसरा साइड निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। Now by PGT we have PGT Pythagoras theorem. Hypotenuse square means AC square is equal to base square AB square plus perpendicular square BC square. AC square is equal to AB square is 7 square plus 8 square. AC square is equal to 7, 7 are 49 plus 8, 8 are 64. AC square is equal to 9 और 4 हो गया 13, 6 और 4 10 और 1 हो गया 11, 113. AC square. So AC is equal to under root of 113. When we cancel this square, this will take root. AC is equal to under root of 130. तीनों sides निकल गई. Now we can calculate 1 plus sin theta. Now first part is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta and 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हमें निकालने हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा. साइन कॉस साइन कॉस साइन थीटा सबसे पहले. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाय AC. BC divided by AC is equal to BC 8 divided by AC under root of 113. And cos theta is equal to base by hypotenuse AB by AC. AB by AC. AB is equal to 7 divided by AC under root of 113. Now first part is 1 plus sin theta. 1 plus sin theta into 1 minus sin theta whole divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is equal to 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. A plus B into A minus B. If we consider 1 as A, sin theta as B, it becomes a formula A plus B into A minus B. A plus B into A minus B ये होता है बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. A plus B into A minus B फार्मूला है A plus B into A minus B is equal to A square minus B square. A is 1, 1 square is 1 plus B square sin theta whole square means sin square theta.
a square plus b square whole divided by a plus b into a minus b. v के बदले यहाँ पे cos थीटा 1 plus cos theta into 1 minus cos theta means a plus b into a minus b means a square minus b square. a plus b into a minus b, a square minus b square. 1 minus cos square theta. a plus b into a square minus b square. a square minus b square. 1 square is 1 minus sin square theta means sin theta का square. Sin theta is 8 by root 13. 8 by under root of 113 its square. Whole divided by 1 minus cos. 1 minus cos square theta. Cos theta is 7 by under root of 113 whole square is equal to 1 minus 8 का भी स्क्वायर है और रूट ऑफ 113 का भी स्क्वायर है. 8 8s are 64 divided by root of 113. Square and root will go cancel. There remains 113 whole divided by 1 minus 7 7s are 49 divided by root of 113 का भी स्क्वायर है. ऐसे रूट ऑफ 113 इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी 7 का भी स्क्वायर रूट ऑफ 113 का भी स्क्वायर. 7 7 आर 49 डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर एंड रूट विल गो कैंसल. देयर रिमेन्स 113. तो ये बनता है अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 113 1 इज 113 माइनस 64 divided by 113 whole divided by 113. 1 is 113 minus 49 divided by 113. It becomes 113 minus 64. 13 में से 4 निकालने तो 9. 10 में से 6 तो 4 divided by 113 whole divided by 13 में से 9 तो 4 10 में से 4 तो 6 whole divided by 113. So it becomes 49 divided by 113. This division will change into multiplication. 64 divided by 113 becomes 113 divided by 64. इसका reciprocal आएगा. This and this will go cancel. There remains 49 divided by 64. 49 divided by 64. So 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is equal to 49 divided by 64. 49 divided by 64. तो सेकंड पार्ट है इसका. सेकंड पार्ट अब कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट तो हमें मालूम ही है. इट इज गिवन 7/8. कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर. 7 7 आर 49 डिवाइड बाई 8 8 आर 64. ये भी आता है 49 डिवाइडेड बाई 64. दोनों आपस में ये बराबर हैं. दैट इज ऑल. थैंक्स.